Hello students, welcome back to our grammar class regarding voice change. In today's lecture, I will explain you the different rules which are applied while changing active voice into passive voice. Okay, now in my previous class, I have told you the basic things about voice change. Now, let us see number one, the rules. Which are the rules? The most important rule is the object becomes subject. Object becomes subject means the object of the active verb becomes the subject of the passive verb, and the subject of the active verb becomes object. Object and subject interchange positions. The subject of the active verb becomes object and object of the active verb becomes a subject. Now after that, after using the subject for the passive structure, the second rule is using a form of a be verb. Important. A form of be verb is to be used while passivizing a sentence. Okay, in my first lecture I have told you what are the different forms of be verbs are to be used in which tense forms. Now a form of be verb which must be according to the tense used in the active sentence. Active sentence रे जो tense व्यवहार होइछि सेही tense अनुसारे आमे बी वर्ब गोटे फॉर्म व्यवहार करिबा, यथा इज आम आर फॉर प्रेजेंट टेंस, वाज वेयर फॉर पास्ट टेंस, बीन फॉर परफेक्ट टेंस एंड बीइंग फॉर कंटीन्यूअस टेंस. प्रथम कथा आमे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करिबा, कर्तृवाच्यर जे कर्ता ताको आमे कर्मवाच्यर कर्मपद कर देबा, कर्तृवाच्यर जे थिबो कर्मपद ताको कर्मवाच्यर कर्ता करिबा. तापरे नंबर 3 होची V3 और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब टू बी यूज्ड. V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. एक्टिव वॉइस रे वर्ब टा जो फॉर्म लागि थाना काहेकि फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, फोर्थ फॉर्म हो. गो, एंड, गॉन, गोइंग चारटा फॉर्म अछि. प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग चारटा फॉर्म अछि. तेणु एक्टिव वॉइस रे वर्ब से प्रेजेंट फॉर्म थाउ, पास्ट फॉर्म थाउ, परफेक्ट फॉर्म थाउ किबा कंटीन्यूअस फॉर्म थाउ, चारिटा फॉर्म जो थिरे थिले मध्य आमे तार थर्ड फॉर्म टा पैसिव वॉइस रे यूज करिया को पड़िबो. अच्छा, कम टू द फोर्थ रूल. आमे वॉइस चेंज रो चतुर्थ नियम जोटा, चतुर्थ रूल जोटा सेटा देखिबा. मु तुमको सब स्टेप बाय स्टेप सब बताऊँगी, वन आफ्टर अनदर कापर कौन करिया पड़े सब कही दूसरी. नंबर 4, द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट is given a preference. ओके, आमे देखिबा जदि गोटे वाक्य रे एक्टिव वॉइस रे एक रु अधिक कर्मपद अछि, डेफिनेटली वन मस्ट बी द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द अदर वन मस्ट बी द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. वी मे हैव आल्सो कॉम्प्लीमेंट्स. तो आमे भलो कि चिन्हिबा. If we have more than one objects and there is direct object and indirect object, this indirect object परोक्ष कर्मपद ताको आमे कौन करिबा गुरुत्व दबा. प्रथमे ताको सब्जेक्ट करके व्यवहार करिया, पासिव करिबा. आउ जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थिबो ताको परवर्ती वाक्य रे सेकेंड टाइम आमे ताको यूज करि परिबा एज द सब्जेक्ट. तेणु एटा होउची अनदर इंपोर्टेंट रूल ऑफ वॉइस चेंज. तेणु आमे जेतरा आमे एग्जांपल सुनबा मु तुम बुझे देबी व्हिच इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हिच इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड हाउ टू यूज बोथ द ऑब्जेक्ट्स in
passive voice. Number 5. By is usually used to introduce the subject. साधारणतः कौन हुए एक्टिव वॉइस रो जो कर्ता सब्जेक्ट जे ताकू आम यदि पासिव वॉइस रे यूज करिया को दरकार पड़े इफ द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वर्ब इज ए डिस्टिंग्विश्ड वन, क्लियर कट वन, known one, then that clear cut subject of the active verb must be used in the passive structure with the help of a preposition by. तो आमे यदि एक्टिव वॉइस रो कर्ता को पासिव वॉइस रे व्यवहार करिया को दरकार पड़े ताले प्रिपोजिशन बाय सहित से जो सब्जेक्ट को पासिव वॉइस रे यूज करिबा. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल नंबर 6. Let is used to change imperatives into passive. ओके, आमे यदि कौन सी इम्परेटिव सेंटेंस दिया जाइए फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स, कमांड्स, रिक्वेस्ट, सजेशंस आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंसेस एंड इफ वी आर आस्क्ड टू चेंज दिस इम्परेटिव सेंटेंसेस आदेश अनुरोधमूलक वाक्य को जदि आमको पासिव करिया को दरकार पड़े तार आमे सेंटेंस आरंभ रे लेट लगेगा. आफ्टर यूजिंग लेट we have to follow the all other rules of voice change. लेट लिखा तापर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करवा तापर जमी बी भर लगे था बी लगेगा तापर भर थर्ड फॉर्म लगे सो एंड सो फोर्थ. ओके, लेट लगे आम इम्परेटिव सेंटेंस को पासिव करवा. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल. Number 7. Adverbs of manner. Adverbs of manner are to be used just before the past participle. Okay, you see adverbs of manner. Adverbs of manner tell us how an action is done. आर्भर ऑफ मैनर सेटा को कहा जाए जोटा कि गोटे कार्य किपरि भाव रे हेला हमको बुझे दिए. ओके, आर्भर ऑफ मैनर आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द वर्ब फॉर द सेक ऑफ एम्फासिस एंड आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब इन ऑर्डिनरी सिचुएशंस. तेणु जो आर्भर ऑफ मैनरटा आम गुरुत्व देवाई वर्ब पूर्व लगाती कि साधारण क्षेत्र में वर्ब परे कि वर्ब ऑब्जेक्ट पर व्यवहार करती ताको पासिव वॉइस रे आमे पास्ट पार्टिसिपल रो ठीक पूर्व व्यवहार करिया को पड़िबो. ओके, नाउ दे आर द मेन थिंग्स अबाउट द वॉइस चेंज रूल्स. आउर गुड़े जिनस अच्छी रिगार्डिंग द यूज ऑफ इन्फिनेटिव, जेरंट एटसेट्रा एंड आई विल टेल यू
in another class, but let us have an example to analyze the rules. Okay, now let us have one or two examples, and in the next lecture I'll discuss how to change questions into passive forms, imperatives into passive forms. But now let us have a statement, one or two examples. Number one, suppose I write letters. I write letters, only 3 words. Now in this example, I is the subject, write is the verb, letters is the object. Now here I is the first person singular number. These are very important. To know the number and person of the subject, know the number and person of the object is very important. Now I is the subject, first person singular number, and therefore the verb for present simple is write, and this write verb is also in first person singular number. Now come to the last word, that is letters. Letters is plural number noun, third person plural number noun object letters. वर्तमान कर्ता हला आई होची प्रथम पुरुष एक वचन, आउ क्रिया होची राइट प्रेजेंट सिंपल, जो क्रिया होची गोटे फाइनाइट वर्ब, गोटे समापिका क्रिया, तार नंबर ऑफ पर्सन होची फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर. तापर जो ऑब्जेक्ट अछि लेटर्स सेरा होची गोटे विशेष्य पद, गोटे नाउन, सेरा बहुवचन अछि, प्लुरल नंबर अछि लेटर्स. देखो हमर जो फर्स्ट रूल रही अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल हमर कौन हबो ना ऑब्जेक्ट becomes subject and subject becomes object, and here this object will come to the position of subject and subject will come to the position of object. Now first of all we have to use letters as the subject of the active verb. Now this letters is the subject. वर्तमान जो लेटर्स आम यूज कले दिस बिकेम दी सब्जेक्ट. ओके, वर्तमान लेटर्स है सब्जेक्ट, एंड हियर यू सी आफ्टर द सब्जेक्ट वी हैव द वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. इन द सेम वे वी हैव टू राइट हियर. नाउ लेटर्स बिकेम सब्जेक्ट एंड आई हैव गिवन यू द टेबल इन व्हिच for present simple we have to use is or am or are as the form of a be verb. Present tense पाई हमको is किंबा am किंबा are गोटे लगे पड़िबो be verb. तेणु एठी जेहेतु लेटर्स होउची बहुवचन प्लुरल नंबर, तेणु आमे लिखिबा are, be verb वाला are. Now this is be verb. Be verb for present tense. And the next rule is we have to use the third form of this main verb. Right, third form होची retain. Right, wrote, retain. This is called V3. Letters are retained. Now we have used this word letters. We have also used the correct passive form of write, that is are retained, and the only one word left, that is I. I was the subject. Now this I will come to the position of the object, and the accusative form of I बर्तमान एटा कर्तृवाच्य होइछि, कर्तृकारक होइछि. बर्तमान सेटा कर्मकारक भितर परिवर्तन हबो, तार कर्मकारक हेगरे सेटा आईटा मी हे जिवो. तेणु करी आमे कोन लिखिबा, and I have told you when it is necessary we have to use the
subject of the active verb, their preposition by is to be used, and here preposition by is used, and again the objective form of the subject is also used. By is the preposition, and this is the object. Me became the object. Now according to the rules, object goes to the position of subject, subject goes to the position of object, and the proper form of the tense is used. Now the active form was I write letters, the passive became letters are written by me. Now let us take another example in which we will have more than one object. As she gave me a book. She gave me a book. Now you see, this is another very easy, very simple example, and this she is the subject. She is the subject. Gave is the simple past verb, and me is the indirect object. And a book is the direct object. Okay, while discussing, I have told you when there is more than one object, direct object and indirect object, the indirect object should be given preference. यदि गोटे वाक्य रे एकाधिक कर्मपद थाए तारे आमको परोक्ष कर्मपद इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्राधान्य देवाक पड़िबो, ताको गुरुत्व देवाक पड़िबो, ताको प्रथमे कर्ता भाव में व्यवहार करिया पड़िबो। तापर आमे सेकेंड जो ऑब्जेक्ट रही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अच्छी ताको मध्य रही आमे सब्जेक्ट करि परिबा, and both are possible. Indirect object can become subject, direct object can also become a subject. Now the answer will be, you see, first of all we will take this indirect object as the subject. This is the accusative form. एटा होची कर्मपद हिची, ताको कर्ता कले मीटा हेजबो I. Okay, now this is done. मीटा वर्तमान यूज हे गला, मीटा I हे गला। तापरे I परे आमे भर लगेबा, I परे भर होची जो गेव होची, गेव रो करेक्ट फॉर्म लगेबा कहबो। For simple past, I have told you in my first lecture, for simple past we have to use was or were. जेतले past simple ले active voice थिबो, passive कले आमे was किंबा were व्यवहार करिबा, and here I is the first person singular number subject, therefore we have to write was. Okay, we can write we are here. We are प्राय तो बहुवचन लगे आउ विभिन्न यूज यदि सिंगुलर से सिंगुलर लगे, एंड इन सब्जंक्टिव मूड वी आल्सो यूज वी आर, बट ऑर्डिनरी आमे आई सहित वाज, ही सहित वाज, सी सहित वाज बा जेकोसी सिंगुलर नंबर सहित वाज लगाती। तेणु बर्तमान एटा हेगला कोन ना बी वर्ब हेगला, ए फॉर्म ऑफ बी लागिगला। तापर देख आसीबो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, दिस इज द मेन वर्ब। बी वर्ब इज एन एडिशनल वर्ब। आमर एठी बी वर्ब नथिला, प्रेजेंट सिंपल गोटे वर्ब थिला, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर रे आमे एठी तापे गोटे बी वर्ब लगेले पासिव करिया पे। बर्तन एई जो गेव अछि पास्ट फॉर्मटा अछि तार पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगे पड़िबो टुगेदर विथ बी। तेणु आमे बर्तमान जो पास्ट पार्टिसिपल होउची गेव जो अछि तार होउची गिवेन, गिव गेव गिवेन। आई वाज गिवेन, बर्तमान ए गेव र काम सरी गला। नेक्स्ट आसी कोन ना आई वाज गिवेन, वी हैव टू यूज द सेकेंड ऑब्जेक्ट। आई वाज गिवेन
a book. This is the direct object, a book. Now this is called V3 and this is the direct object. One object used, the second one is used here, and we should not write I was given by her a book. That will be incorrect. Now I was given a book. Now this one is over. Now the last word, the subject is left. बर्तमान जो सीटा रहीगला ताको आमे बर्तमान ऑब्जेक्ट हिसाब यूज करिबा. आंसर हबो सी पाई आमे लिखिबा बाय सी रहीगला हर. तेणु एठी लागिला प्रिपोजिशन बाय लागिला आ एटा हेला ऑब्जेक्ट. ओके, and this was the subject, she was subject, her became object. The answer is I was given a book by her. Okay, now similarly we can also make a book as the subject, and if a book is made the subject, जदि आमे a book टाकू कर्ता करिबा ताले कोन हबो, a book was given to me by her. A book was given to me by her. Both are correct. Okay, now let us take another example from the imperative mode where we can use let. Send the letters by post. Send the letters by post. Okay, now you see it is a direct imperative. सीधा सड़क प्रत्यक्ष भाव में जन को अनुरोध करा होची किंबा जन को ऑर्डर दिया होची. नाउ हियर द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, इट इज नॉट यूज्ड हियर. द सेंटेंस बिगिन्स विद द वर्ब सेंड. द letters is the object. The letters is the object, and here by post is the adverb of manner. Okay, how? By post. Okay, now here I have told you to use let at the beginning. Answer is first of all we have to use let to passivize the imperative sentence. बर्तमान जो imperative sentence अच्छी ताको हम passive करिबा. प्रथमे रूल अनुसार let लगेबा. let पर कौन करिबा, we have to use the object as the subject and the letters होची object ताको हमें subject करिबा. लिखिबा let the letters. let the letters. बर्तमान let लगिगला, एटा सब्जेक्ट हो गला, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गला. तापर कौन आमको बी भर लगे पड़ो, मेन भर थर्ड फॉर्म लगे पड़ो. कौन लिखा, लेट द लेटर्स पासिव कले इंपरेटिव मोड. आमे इंपरेटिव मोड को पासिव कले बी भर बी लगेबा. आफ्टर द मोडाल्स शाल, विल, कैन, मे, मस्ट आमे बी भर बी लगेबा. So also in case of imperative mood आमे बी लगेबा. And after B आमे कौन करिबा ना मेन verb थर्ड फॉर्म लगेबा. The third form of send is sent. Let the letters be sent. आउ जो रहला adverb रहिछि, let it be used at the end by post. And this sent is V3.
The answer is let the letters be sent by post. Okay. Now this was for today's class, and I will discuss how to change the questions and some other important imperative sentences in my next class, and I will also tell you something more about many other rules about the quasi passive sentences, so on and so forth.